कंप्यूटर क्लास। तो समस्त को जय जगन्नाथ। हेलो ब्रदर एंड सिस्टर। तो हेलो क्यूट लिटिल स्वाय। तो आज आम क्लास प्रथम कंप्यूटर तो स्टार्ट करने आगु समस्त दिल से आई लव यू धन्यवाद। तो इंटरनेट सर्विस जो क्या है? The internet is a worldwide network www a computer that are able to exchange information with each others. Internet stands for International Network, which began in 1950s by Bernard Scrave. Bernard Scrave द्वारा as the father of internet. Bernard Scrave कौन? The father of internet. Bernard Scrave. Bernard Scrave होची the father of computer. Father of internet. Father of computer तो होची चार्ल्स बेबेज. The father of network होची Bernard Shaw. Internet is a network that consists millions of private and public networks of local to global scope. Basically, network is a group of two or more computer systems like together. तो आम जाना हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट होची कि 1969 द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया at Los Angeles and the University of Utah were connected for the beginning of the ARPANET Advanced Research Project Agency Network. Using 50 kilobytes circuits, it the world's first operational pocket. Switching the network, the global this project was to connect computer different university US defense. In mid 80s, another federal agency, National Science Foundation, created a new high capacity network called NSA, which is more capable than ARPANET. The only drawback NSFNet was they allowed only academic research. So on this network is kind of private business, it's so private. तो एडवांटेज इंटरनेट रो एडवांटेज कौन कौन ना अलाउज टू इजिली कम्युनिकेट करिपारिबा कि निज सांग मान सहित कम्युनिकेट कि बंधु बांधव सहित सहज कम्युनिकेट हो जाउछ इंटरनेट सहित कथबार्ता। तो ग्लोबल रीच एनेबल टू कनेक्ट एनीवन सहित प्रत्येक सहित ग्लोबल भी हो पारछि इंटरनेट द्वारा एमती जूम ऐप एमती। तो वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ कंप्लेंट्स एडवर्टाइज कौन बिजनेस टाइप ग्रेटेस्ट आसिंग इनफॉरमेशन रिड्यूस रिसर्च टाइम रे भी कंप्यूटर बहुत व्यवहार रही। तो डिसएडवांटेज भी अच्छी इंटरनेट रो एडवांटेज भी अच्छी आउ डिसएडवांटेज भी अच्छी। तो डिसएडवांटेज होची इट इज ए मेजर कौन ना इट इज ए मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो मेसेज सेंट अक्रॉस द इंटरनेट कैन बी इंटरप्रेटेड एंड ओपन टू एब्यूज बाय अदर एब्यूज करि पारे। तो much of the information is checked may be incorrect irrelevant हो पाए। अदर साइबर फ्रॉड भी हम साइबर फ्रॉड में टेक क्रेडिट डेबिट कार्ड्स नंबर्स रे भी हो पारछि। डिसएडवांटेज इंटरनेट रो भल फायदा थाए भी खराब फायदा भी मध्य थाए। गोटे थाए एडवांटेज आ गोटे थाए डिसएडवांटेज इंटरनेट रो भी थाए। साइबर फ्रॉड्स भी मध्य हुए डिसएडवांटेज रे। इनसुटेबल अनक्रेडिबल मटेरियल अवेलेबल थाए सेमती समटाइम यूज्ड ऑन नेटवर्क सच एज पीपल हु थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन थाए का सहित ना बैंडविड्थ द कॉस्ट। तो मत आगे कह इंटरनेट रो जनक
फादर ऑफ इंटरनेट के फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ इंटरनेट के ना विंड सर्फ हूँ फादर ऑफ इंटरनेट रो तो bandwidth the cost are the two factors that helps you deciding with internet connection is to use to spend internet access depends on the bandwidth okay the dial off connection जो फोन जो यूज कर लिखा ना डायल ऑन तो डायल ऑफ हूँ डायल ऑफ इज मेथड ऑफ कनेक्शन connected to the internet using an exciting telephones when a user initiates a dial-up connection the medium dials phone numbers and internet service provider ISP ର full form कौन ना internet service provider ISP internet service provider so that is designed to receive dial-up calls. The ISP then establishes the connection, which usually taken the 10 seconds and is composed by several buzzing sound. Its transfer speed 56 kilobytes. 56 kilobytes पर्यंत इधर 56 kilobytes. Broadband connection कौन था ना कंप्यूटर रो The term broadband commonly refers to high-speed internet access that is always on the faster than traditional dial-up access. It uses telephone line connect to the internet. The transfer speed of broadband connection is 256 kilobytes. Broadband connection है 256 kilobytes पर था है. तो broadband includes several high-speed transformation technological such as तापरे हमें जानिबा DSL रो फुल फॉर्म जानछो तो DSL रो फुल फॉर्म होची डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL रो फुल फॉर्म होची डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन it is a popular broadband connection. It provides internet access by transmitting digital data over the wires of local telephone. DSL is the most common type of broadband service. It uses just wait. It is a popular broadband connection. It provides internet access by transmitting digital data over wires local telephone network. This is the most common type of broadband service. It is extended copper 256 kilobytes सेटा तो जानी चो तो cable modem होजी. This service enabled cable operator to provide broadband using the same coaxial cables that deliver pictures and sound to your TV set. Most cable modem are external service that have two connection on the cable wall. The outlet outer to a computer. They provide transformation speed 1.5 Mbps. Broadband over power line BPL. Broadband over power line BPL. ओवर पावर लाइन बीपीएल क्वेश्चन पचा दबा बीपीएल लो फुल फॉर्म कौन मन रखे हो ना ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन बीपीएल is the delivery of broadband over the exciting low medium voltage electric power distributed network transfer speed up to MP जो एबे गाहा गड़े रे बीपीएल भी यूज होची ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन होची बिलो प्रोपर्टी लाइन और होची ब्रॉडबैंड पावर लाइन ब्रॉडबैंड और पावर लाइन बीपीएल यूज हुए गोटे होची बिलो प्रोपर्टी लाइन गाँ गहली बीपीएल यूज हुए तो आउ गोटे बीपीएल होची ब्रॉडबैंड ऑफ पावर लाइन बीपीएल
एटा लो मीडियम वोल्टेज प्रदान करता है इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर यूज टू 3 mbps voltage. So BPL is good for areas where are the no other broadband connection but power infrastructure for exist. For example, rural BPL टा यूज हुए कोडी ना रूरल एरिया कहले माने आंचलिक जगह तो wireless broadband connect home or business to internet using radio link between the customer location and the service provider facility. Wireless broadband can be mobile, fixed, unlike DSL cable. Wireless broadband requires neither modem nor cable. It can be easily established in areas where it is not feasible to displace DSL cable. Some ways to connect the internet wireless are follows. तो wireless fidelity वाईफाई ର full form कौन जान तो वाईफाई ର full form होची wireless fidelity. So it is a universal wireless network. It is a universal neural network technology that utilize radio frequency use हुए. So it transfer data. Wi-Fi allows high speed internet connection without the use cable wires. केबल वाईफाई जो यूज कर धर गोटे सांगठू फोन मागिकी वाईफाई नि से कौन केबल यूज हुए कि केबल यूज हुए ना से कौन कि कनेक्शन विदाउट द यूज केबल वायर्स यूज हुए ना. तो वाईफाई नेटवर्क कैन बी यूज पब्लिक इंटरनेट एक्सेस जमी हॉटस्पॉट जोटा कहती द सच as a restaurants, cafe shop, hotels, airport connection other city parks रे भी यूज होता है. वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेटेबल ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस वाईमैक्स होची वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेटेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड interoperability of microwave access. WiMAX system and aspect deliver broadband access service to residential enterprise customer in an economical way. It has the ability to provide service even areas are difficult where infrastructure to reach and ability to overcome the physical limitation of traditional wired infrastructure. The mobile wireless broadband service. These services are also becoming available for mobile telephone service providers. Others, this service generally appreciated for mobile customer requires special PC card with a built-in antenna that plugs into users' computer. Generally, they provide lower speed range, several 100 kbps. 100 kbps रे यूज हो. तो इंटरनेट होची it is a private network. Internet is a private network. The internet tools but available within organization in large organization. Internet allows easy access to corporate information for employees. Extranet is a private network that uses the internet protocol and the public telecommunication system to securely share part of business information. The podcast is form of the audio broadcasting on the web. It can be listened on the go while commuting office or even while working रे काम करता है. तो इंटरकनेक्शन प्रोटोकॉल्स कहले a protocol is a set of rules. जो प्रोटोकॉल थाए जेकोसी क्षेत्र में पुलिस क्षेत्र में भी प्रोटोकॉल लगी थाए कोनोसी जानवाहन रे भी प्रोटोकॉल लगी थाए ताको भाई भी टी रूल्स अछि सेमि कंप्यूटर भी प्रोटोकॉल्स पई रूल्स थाए that govern data communication. It defines what is communicated, how it communicated, and even it is communicated. Some of the protocols generally used to communicate via network as follows. तो टीसीपी बा आईपी कहले कौन ना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. टीसीपी होची टीएसपी होची ट्रांसमिशन
sorry TCP control protocol, transmission control protocol বা ইন্টরনেট প্রোটোকল হচ্ছে আইপি। আইপি কলে ইন্টরনেট প্রোটোকল। তো ଆଉ TCP হচ্ছে ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল। ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল। তো ଆମେ ଜାଣିବା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ତଥ୍ୟ। ତ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ରିଲେବୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। It is ensures that message sent from sender to receiver is properly routed. TCP converts message into set of packet at the source, which is the reasonable back into message that destination. The internet protocol hoji, it allows different computers to communicate by creating network of networks. IP handles the dispatch of packets over the network. It maintains the addressing of packets with multiple standards. Each IP packet must contain the source and the destination address. An IP address is 32 bit number. गोटे IP address रे कितना बिट नंबर था ना 32 मन रखी दो। IP address रे टोटली 32 था। IP कहले कौन इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP TCP IP कुआ जाए बट TCP कुआ जाए। IP होची इंटरनेट प्रोटोकॉल तो TCP होची ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 32 बिट नंबर 32 बिट नंबर था 32 बिट नंबर। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहले FTP। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होची it can transfer file between any computers that have an internet connection and also works between computers using totally different operating systems. Some example FTP software, FileZilla, Casplans, GFT, Concurrence, etc. तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP मन अच्छी यहाँ पचला ओडिशा पुलिस फायरमैन एग्जाम रे HTTP फुल फॉर्म। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होची HTTP डिफाइन हाउ मैसेज आर फॉर्मेटेड। मैसेज को फॉर्मेटेड करिवो एंड ट्रांसमिटेड एंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर्स इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड। तो यहाँ फॉर्मेट रे करिवो ताकू ट्रांसफर करिवो कोठी एक्शन शुड बी टेकन वेब सर्वर को ट्रांसफर करिवो। तापर ब्राउजर कौन रेस्पॉन्स दबो ता वेरियस कमांड आसीबो ता कोंती HTTP से प्रोसेस को HTTP कहते हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कह जाए। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTTP HTML होची हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होची इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस। ए मार्कअप लैंग्वेज इज सेट ऑफ मार्कअप। इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग वेब पेज। तो वेब पेज डिजाइन करिया पई कोन ना HTML व्यवहार हुए। तो वेब पेज रो व्यवहार पई कोन ना कौन व्यवहार करे वेब पेज बने पई कोन ना HTML रो व्यवहार होई थाए। कौन था ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल सॉरी मार्कअप लैंग्वेज। ए मार्कअप लैंग्वेज इज सेट ऑफ मार्कअप एंगल ब्रैकेट थाए लेस देन आ गोटे थाए ग्रेटर देन रो व्यवहार होई थाए। टैग्स व्हिच टेल्स वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेज वर्ड एंड इमेज फॉर द यूजर इज इंडिविजुअल मार्कअप कोड। तो इज रिफर्स टू एन एलिमेंट और टैग एलिमेंट करे और टैग मध्य करता है। द टेलनेट प्रोटोकॉल होची टेलनेट इज ए प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर and connect PC server on the network. Telnet session start by entering valid username and password. Valid username दरकार और password दरकार।
U- Usenet protocol. The Usenet service allows a group of internet users to exchange their views, ideas, information on the some common topic that internet to all the members belongs to the group. Several such groups exist of the internet are called news groups. Usenet has no central server administration. Point to point protocol, PPP. Point to point point to point protocol होची it is dial account. It is dial account which puts your computer directly. It puts your okay computer directly on the internet. Direct PPP. A medium requires for such connection which transmits data 96,000 bits per second. केते 96,000 पर सेकेंड कौन ना पॉइंट पी ट्रिपल पी पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पीपी पूरा फुल फॉर्म कौन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल so I will come back within 2 minutes. Point to point protocol. पीपी मेरा फुल फॉर्म कौन ट्रिपल पी रो फुल फॉर्म
कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल तो से 96,000 पर सेकेंड 96,000 पर सेकेंड रे से काम करे आई विल कम बैक तो ताकू कह पीपीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ताकू SMTP SMTP रो फुल फॉर्म होची ना सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल simple mail transfer protocol it is the standard protocol for email service on a TCP IP networks TCP IP networks ro the standard protocol for email service SMTP the on the TCP IP networks it provides the ability to send and receive email message SMTP it is the standard protocol for email service on a TCP IP network. TCP IP networks it provides the ability it provides the ability it provides the ability to send and receive to send and receive it provides it provides the ability to send and receive email messages the SMTP it is the standard protocol for email service standard protocol for email services on a TCP IP network TCP or IP networks transfer transmission control protocol sorry guys some effect I will come back last only 2 minutes Whew. Just wait I will come back हाँ
मो क्लास करूँ अरे केडे केडे भेंडिया को पीएच पानी ईमेल मैसेज करता है एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ले सिंपल मेल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ईमेल सर्विस ऑन टीसीपी और आईपी नेटवर्क से it provides the ability to send and receive email message wireless application protocol wireless application web browser is commonly used for web browser for small mobile device such as cell phones सेलफोन ने कौन यूज हुए ना WAP वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल WAP रे यूज हुए कौन ना वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल रे यूज होता है WAP सेलफोन्स गुड़ा करे वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP वॉइस ओवर internet protocol VoIP voice over it allows deliver of voice communication over IP networks IP कहले कौन internet protocol IP network for example IP calls से voice over internet protocol रे यूज हुए तो पोस्ट ऑफिस प्रोटो वर्जन POP3 होची it is an internet standard protocol used by local emails software client to retrieve emails from a remote mail server over TCP IP connection TCP IP बुझी पान अथवा IP होची इंटरनेट प्रोटोकॉल तो TCP होची ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कौन ना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन तो POP3 it is an internet standard protocol used by local emails software clients returns email from a remote mail server over TCP IP post office protocol version 3 post office protocol version of 3 POP3 post office protocol version 3 post office protocol voice over internet protocol WAP होची वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकॉल तो SMTP होची सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेटी TCP IP रे यूज होय थाए तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होची PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल तो पर सेकंड रे 96000 वाट बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर करबो 96000 पर बिट्स ट्रांसफर करि पारे तो ओके टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब www वर्ल्ड वाइड वेब terms related to internet the world wide web is a system of internet servers that supports hypertext and multimedia a hypertext and multimedia use way to access several internet protocol on signal interface www not www Roman this is only computer version the www it introduced 30th March 1989 the triple world wide
वेब वर्ल्ड वाइड वेब हूँ ता फुल फॉर्म तो वर्ल्ड वाइड वेब रो केबे ना 1989 ने 30th मार्च हाँ कौन सी just wait, I will come back only 2 minutes. Okay, see you tomorrow. Okay. हाँ भाई सुन बुढ़े टुआ नहीं जीव बुढ़ा कर पाको नहीं आसु मु बुढ़ा कर पाको नहीं आसु स्कूल गला है तू मकाने बता दो मु दे मार दे कौन बुढ़ा कर ठेकु नहीं आसु बता दा सिंते तो थैंक यू 1 मिनट अपेक्षा करते यार थैंक यू ऑल द बेस्ट तो 30 मार्च 1989 ने वर्ल्ड वाइड वेब कौन थला ना प्रमोट माने आसी थला आगु को द वर्ल्ड वाइड वेब इज often abbreviated as the web or www. The World Wide Web is a way of the exchanging information between computers on the internet. The web page, computer पर थियो web page, the backbone of the World Wide Web. जिमिति गोटे पुअर बैकबोन थाए बापा सेमिति गोटे वेब पेज रो बैकबोन होची www कहले वर्ल्ड वाइड वेब होची बैकअप वेब पेज रो. The backbone of the World Wide Web is made of files. The backbone of World Wide Web is made of files called pages or web pages. जो pages करे ता कौनती web pages. The containing information and links to resource both text and multimedia. Thought internet is created using HTML. HTML full form जानछो hypertext mail protocol जोटा mail कहते तो HTML तो hypertext markup language कौन ना hypertext markup language तीन थर hypertext मान लो markup language एले कौन language व्यवहार होता है. The backbone of the World Wide Web is made the files called pages, web pages, containing information and links to resource both text and multimedia throughout the internet is created using HTML. Hypertext कौन बनती HTML hypertext markup language hypertext markup language. तो there are basically two main types of web pages, static and dynamic. There are basically two main type of web page. दीटा हमर web page अछि गोटे होछि static आ गोटे होछि dynamic. गोटे static गोटे होछि dynamic. The main or first page of a website is known as home page. First page होछि कोन ना home page
the main the main or fast page the main or fast page of a website is known as home page. Note: bookmarks are links to web pages that make it easy to get back to your favorite page. Bookmarks are links. The bookmarks are easy ways to link the process. Link the web page, make easy to get back to your favorite page को पढ़े आसिबा. The hyperlink is a piece of text which connects different document on web page. It is reference data the user follow by simple clicking it. Website with बढ़िया. A group of web pages that follows the same theme. The group of web pages that follows the same theme and are connected. Web page that follows the same theme and are connected together with hyperlinks is called website. Hyperlinks is called कौन कहा जाए ना ताको website कहा जाए. A group of web pages that follows the same theme and are connected together with hyperlinks. Hyperlinks द्वारा connect होए ताती. A group of web pages that follows the same theme and are connected together with hyperlinks द्वारा is called website कहा जाए. Website क्या कहा जाए? A group of web pages. The group of web pages follow the same theme are connected together. The web pages at the same time they connect each other. So with hyperlinks द्वारा is called website. Hyperlinks द्वारा जितने web pages connect हो जाती each side तो ताकू कहा जाए. A website is collection of digital document. A website is a collection of digital documents, primary HTML files. They are linked together that exist web under the same domain. For example, http://www.carwell.com is a website. Well, http://www.carwell.com/new/ is a web page. Web browser. It is a software application that is used to locate, retrieve and display content to the World Wide Web, including web pages. Web browsers are programs used to explore the internet. We can install more than one web browser on a single computer. The computer is navigated through files, folder, website. The help for the browser को help करता है. सावाइस कौन कर छो बे सिपुन सर ଏବେ ଅଛୁ କୋଉଠି ଲଦାଖରେ ନା କୋଉଠି ବେ F11 की विंडोज कीबोर्ड टू फुल स्क्रीन मोड टोटाली आमर जो कीज अच्छी F11 पर्यंत F3 जमी रिमूव F5 एस्केप कीज सब अच्छी कीज आर the two types of web browser are follow. Two types: the text web browser. The text web browser. A web browser that display only text-based information is known as a web browser. For example, Linux, which provides access to internet the text mode only. हम जो web browser अच्छी तो Linux होची a web browser that displays only text-based. A web browser that displays only text-based information is known as text web browser. For example, Linux. The Linux होची LYNX Linux, which provides access to internet in the text mode only. ये Linux टा कौन ना text mode रे यूज हो कौन ना text mode कोडिंग ना text mode रे यूज हो Linux टा text web browser. तो text web browser रे Linux टा यूज हो तो वेब ब्राउजर रे लिनक्स टा ही यूज होता है. ग्राफिकल वेब ब्राउजर होची
A web browser that supports both text and graphical information is known as graphical web browser. For example, Internet Explorer, Firefox, Netscape, Safari, Google Chrome and Opera. ଅପେରାଟା ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଦେଖିବ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ। ତ ଗ୍ରାଫିକାଲ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଫାୟାରଫକ୍ସ, ନେଟସ୍କାପ୍, ସଫାରି, ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ସେମିତି ଅପେରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ୱେବ୍ ସର୍ଭର ହେଉଛି ଏ ୱେବ୍ ସର୍ଭର ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୟାଟ୍ runs websites. The web server is a computer that runs websites. The server computer will deliver those web pages to the computer that requests them and may also do other processing with web pages. The web browser client requests HTML. HTML of form जांच ना कौन ना हाइपर टेक्स्ट एम रे याद नहीं लैंग्वेज एम रहुची मार्कअप एम रहुची मार्कअप एम रहुची कौन ना मार्कअप लैंग्वेज files from web server. Every web server that is connected to the internet is given unique address. IE देखो सब इंटरनेट तले i.e यूज हुए आ गोटे होची IP एड्रेस यूज हुए तो मेड ऑफ ए सीरीज ऑफ 4 नंबर्स बिटवीन 0 to 255 0 to 255 separated by periods dot. For example, APCA HTTP server, Internet Information Service, IIC, Internet Information Service, IIC, Lightable, etc. Okay, out reminder. So every web server that is connected to the internet, every web server connected to internet सहित is given unique address थाए गोटे i.e गोटे IP address थाए internet protocol जोटा कहते IP address टा तो made of a series of 4 numbers between 0 to 255 0 to 255 separate थांती by periods dot. For example, APCA HTTP server तो Internet Information Service IIC and Lightbulb etc. सेमिति की cookies. Note: cookies is a small message given the web browser by web server. It store information about the user's web activity. Cookies is a small message. Cookies is a small message. The web address and URL. Web address and URL. A web address identifies the location of a specific web page on the internet, such as http://www.learnyoga.com. learnyoga.com. So a web address identifies the location of specific web page on the internet, such as http://learnyoga.com. On the web address are called URLs. URLs अधिक यूज होता है कोडी ना देखियो साबुन खोल मान कर देखियो तो लिखा दो URLs सेमती. It stands Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. Tim Berners-Lee created the first URL. URL के बनते हैं ना Tim Berners-Lee created the first URL 1991 to allow the publishing hyperlinks on the World Wide Web. World Wide Web. For example, http://www.google.com/service/index.html. तो http://protocol identifier. http:// ଥିଲେ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर ता माने बुझिबो. तो www होची वर्ल्ड वाइड वेब. तो google.com होची डोमेन नेम. google.com होची डोमेन नेम. google.com होची डोमेन नेम. तो सर्विसेस होची डायरेक्टरी. इंडेक्स एचटीएमएल होची वेब पेज.
वेब पेज केमिति मन रखियो ना index.htm जितले कहथिबो ताको जानिबे जे सेटा होची वेब पेज विषय रे कहै जायछि तो स्लैश सर्विसेज स्लैश ता कहबे डायरेक्टरी तो google.com होची डोमेन नेम तो www होची वर्ल्ड वाइड वेब http होची प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर http डॉट स्लैश होची प्रोटोकॉल the protocol identifier http dot slash protocol domain name service directory index system होची web page http dot slash होची protocol identifier कहते ना प्रोटोकॉल एचटीटीपी प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर तो आमे फास्ट जानिए डोमेन नेम हो जी कोन google.com को डोमेन नेम कहा जाए google.com को डोमेन नेम कहा जाए सर्विसेज हो जी डायरेक्टरी तो इंडेक्स एचटीएम हो जी वेब पेज www हो जी वर्ल्ड वाइड वेब तो http हो जी प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर http होची कोन प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो सेटा होची प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड google.com होची डोमेन नेम सर्विसेज होची डायरेक्टरी तो इंडेक्स होची वेब पेज index.htm होची वेब पेज domain is a group of network resource is assigned domain is a group of network resource assigned to group of users a domain name is way to identify and locate computers connected to the internet a domain name must be unique it always have two or more parts separated by periods dot for example google.com yahoo.com google.com domain name is a group of the domain name is a group of network resource assigned to group of users a domain name is way to identify करे and locate computer connected to the internet a domain name is must be unique it always have two or more parts separated by periods and dot रे जना पड़े for example google.com yahoo.com गोटे होची google.com आ गोटे होची yahoo.com गोटे होची google.com गोटे होची yahoo डोमेन नेम गोटे आइडेंटिफायर नेम दे तो डोमेन एब्रिविएशन domain are organized by the type of organization and the country domain are organized by the type of organization and the country a three-letter abbreviation indicating the organization and usually two-letter abbreviation indicate the country name most common domain abbreviation follow organization follow information organization .com which commercial .government .educational .email military .net network associate .net network .org .non-profit organization non-profit some domain abbreviation for country as well India.au Australia.fr France New Zealand United Kingdom डॉट रवि हो जाए डॉट हम डॉट org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस
domain name system. DNS stores the associated many type of information. Many type of information use करे. DNS stores the associated the many types of information with domain names, but most importantly, it translates domain names, computer host names to IP address. It also lists mail exchange servers, accepting email for each domain. DNS is an essential component for contemporary internet use by way the blog. A blog is a website or web page in which an individual records opinion and links to other sites on regular basis. A typical blog combines text, image, links to other blogs, web pages, and media related to topic. Most blogs are primarily textual, although some focus on art, photographs, videos, music, blog, photographs, video, music use हुए the audio. These blogs are referred to as the edu blogs. The interest the blog is also known as post. The news group is a news group is an oh my god fuck मैं कब तक आग लाऊंगा कोई बात नहीं पढ़ेंगे इतना जो प्यार मुझे तो किया मेरे हाँ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो आमे पढ़ुले न्यूज ग्रुप विषय ए न्यूज ग्रुप इज एन ऑनलाइन डिस्कशन होता है फोरम accessible through on-net debates to discussion on a specific topic. Online discussion group allows interaction through electronic bulletin board system and chat session. तो सेमती आसो सर्च इंजिन. The search engine, it is a website that provides the requires data on specific topic. It is a website that provides the required data on specific topics. Search engines turn the web into a powerful tools finding information on the any topic. When a search engine returns the links to web pages corresponding to the keywords entered is called hit, otherwise called miss. Hit otherwise called miss. So many search engines also have directories or list of topics that are organized into categories. Browsing these directories is also very efficient way to find information on given topic. Here the most popular search engine. The most popular search engine होची Google होची http://www.google.com सेमती अल्टा विस्टा होची http://www.altavista.com Yahoo http://www.yahoo.com Hotbot http://hotbot.com http://likes.com etc.com web browser. The Note Project Loan is a search engine project by Google for providing internet access to rural remote areas using high altitude helium filled aliens. The service of internet होची an internet user an internet user can access to wide
variety of service such as electronic mail, the file transfer, internet group of membership, multimedia displays, real-time broadcasting, shopping, etc. Some of the important service provided by the internet and described below. The chatting होची it is the online textual multimedia conversation ओके चैटिंग तो सबुथिरे कहते व्हाट्सएप हो इंस्टाग्राम हो यूट्यूब रे कौन वीडियो देखापी सर्च हो तो चैटिंग तो सब हुए व्हाट्सएप देखो इंस्टाग्राम रे यूज हुए तो इट इज ऑनलाइन टेक्सुअल एटा होची ऑनलाइन टेक्सुअल मल्टीमीडिया conversation. It is widely interactive communication process what takes place over the internet. Chatting virtual means the communication that involves the sending receiving for message sharing audio and video between users located in any part of the world. For example, Skype, Yahoo Messenger, the Skype, Yahoo Messenger, etc. Skype, Wi-Fi Messenger, etc. use हुए ऑनलाइन टेक्सुअल मल्टी मीडिया कन्वर्सेशन चैटिंग जोटा कहती तो ईमेल विषय जानवा इलेक्ट्रॉनिक मेल तो ईमेल जानवा ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन एटा होची इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर सेंड करवा रिसीविंग करिवो इलेक्ट्रॉनिक मेल लेट्स सेंड एंड रिसीव मैसेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स सेपरेट बाय आदर सिंबल गोटे आदर सिंबल ले यूज हुए तो फर्स्ट पार्ट यूजर नेम एंड द सेकंड पार्ट होस्ट नेम डोमेन नेम जेटा डोमेन नेम कहले गोटे आइडेंटिटी को बुझाए डोमेन नेम होची google.com को भी बुझाए डोमेन नेम तो डोमेन नेम होची google.com भी बुझाए राइट google.com ही डोमेन नेम बुझाए तो फास्ट आधार रही डोमेन रही तो हाउएवर स्पेसेस आर नॉट अलाउड विद इन ईमेल एड्रेस तो स्पेसेस आर नॉट अलाउड विद इन ईमेल एड्रेस हाउएवर स्पेसेस आर स्पेस ईमेल ले स्पेस यूज हुए न थाए तो समस्त लगा लगी ही थाए विद इन द ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल arihantbook@gmail.com कि राजू बोलूंगा नहीं मेल पासवर्ड here the arihantbook is user name and gmail.com is a host name host कहले निजर जो पर्सनल here the arihant user name and gmail.com host name email transmitter between computer system which exchange message exchange करे or pass the into other sites according to certain internet protocol or rules for exchanging email. To use email, a user must have email address. Emoticons or smiley are used in an email to express feelings clearly. Storage area for email messages called mailbox. Storage area for email message is called mailbox. स्टोरेज एरिया कहते कौन ना मेल बॉक्स कह स्टोरेज एरिया कौन कह जाए तो मेल बॉक्स कह जाए ओके 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 सॉरी जो तापरे आरो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होची इट इज ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इंटीग्रेट्स video and audio connect user anywhere in the world as if they were in the same room. This term usually refers to communication between three or more users to or at least two locations. Each user group of users who are participating in video conference typically most have computer, cameras, microphone, a video screen, sound system. The e-learning होची e-learning electronic learning refers to the electronic mode of delivering learning, training or educational program users. It is the mode of acquiring knowledge by means the internet and computer based training program e-learning. E-banking होची electronic banking is also known
is also known as internet banking or online banking କୁହାଯାଏ banking. E-banking means that any users with personal computer and browser can get connected to his bank's website to perform any of the virtual banking function. All the service that the bank had permitted on the internet displayed in the menu. E-shopping होची electronic shopping or online shopping is the process of buying good or service from merchant wholesale, internet, books, clothing, household appliance, voice, hardware, software, health insurance. Just some of the hundred of projects consumers that can buy from online stores, home e-shopping sites for Neptool. କୋଉଥିରେ ନା ନ୍ୟାପଟୁଲ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ୟବି ହୋମସପ୍ 18 ହୋମସପ୍ 18 ମେସୋ ଏସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ହୁଏ ଇ ସପିଂ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ତ ଇ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକିଂ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଭାୟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ you need to personally go to office or counter to book reserve railway and railway tickets hotel room tourist place e reservation मिले कोठी ना tickets रे hotel room रे टूरिस्ट पैकेज रे एयर रे तो बुक रिजर्व काउंटर रेलवे रे एगुड़ा यूज होता है तो सोशल नेटवर्किंग होची कि इट इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम टू मेक कनेक्शन विथ friend, family, social networking, classmate, customer, clients, etc. It can for social purpose, business purpose both. Social networking has grown to become the first, just most influential component web. The most popular social working site are Facebook, MySpace, Orkut, etc. Facebook, MySpace, etc. Orkut, 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 Orkut यूज होते हैं तो कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन तो लिंक्डइन होची LinkedIn is an American site which provides business and employment oriented service. It was the founder of the Reid Hoffman. RH Reid Hoffman तो रेड हफमैन द्वारा आरंभ होता तो रेड हफमैन द्वारा लिंक्ड होता 2002 रे 2002 रे LinkedIn is the platform that allows business people and professionals all over the world, regardless industry, integrate test meeting, customer getting touch with vendors, record new employees, new keeping with the latest update business content. तो Facebook विषय जाना Facebook is an American social networking site which was founded 2004 मार्क जुकरबर्ग फेसबुक ओनर किए पचारि तो मार्क जुकरबर्ग हूँ फेसबुक ओनर किए ना मार्क जुकरबर्ग तो मार्क जुकरबर्ग इट हेल्प्स यूजर्स टू कनेक्ट विद their family friends Facebook allows you to upload photo, maintain photo album that can share friends. It supports the return online. तो आम जाना ट्विटर It is an American company which provides social networking service. Besides this, Twitter also provides online news. Twitter was founded in 2006. It is an American company which provides social networking service. Besides the Twitter also provides online news. Twitter was founded in 2002.
କିଏ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡୋର୍ସି ଡୋର୍ସି Jack Dorsey, Keystone, even when it enabled the reason is read in the post tweets file. Those who are not registered can read them. तो ଏବେ ଜାଣିବା ଏବେ Instagram ଉପରେ Instagram. It is a free online photo sharing application and social media platform that can be acquired by Facebook in 2012. Facebook के बाद approve हुआ. Instagram allows you to edit and upload photos and short videos through a mobile app. Users can add caption to each other post and use hashtags and location-based geotags to index these posts, make up searchable by other users within app. E-commerce, electronic commerce includes sharing business just ଅବାକ୍ ଆକାଶ ଆଜି ରହିଛି ଚାହିଁ ସବୁ ଋତୁ ପୁଣି ଝରିଗଲା ଗୋଲାପ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ includes sharing business information, maintaining business relationship and conducting business transaction by means of telecommunication networks or process transacting goods over the internet. Electronic data interchange EDI. M-commerce, mobile commerce. E-commerce होची इलेक्ट्रॉनिक M केते हेबो हेटा जे मोबाइल provides the application for buying and selling a good server through wireless internet enabled handheld device. It involves the new technologies, service and business models. Mobile commerce was launched 1997. Kevin M commerce होची मोबाइल कॉमर्स 1997 का ना केविन मॉडल्स का द्वारा ना केविन द्वारा
केविन द्वारा होता। तो टिटबिट्स कहले क्लस्टर इज ए ग्रुप ऑफ सर्वर दैट share work and may be able to back each other API server falls with the webmail interface. बहु the webmail interface email are accessible from anywhere in the world. With the webmail interface webmail interface anywhere in the world. Rich text formatting helps the sender of email format the content his her email message by applying font size, bold, italic, etc. Rich text formatting rich text formatting that share work and may be able to back each other cluster use video conferencing app Zoom. तो Zoom विषय जानिबा it is the property software developed by Zoom video communication in September 2012 in September 2012 it is compatible with Windows, macOS, iOS, Android, Chrome OS and Linux. It is a property software developed by Zoom video communicating September 2012 then at 2012 it is a compatible with Windows, MS, COS, iOS, Android, Chrome OS and Linux रे था Zoom app. Its priority software developed by Zoom video communication September 2012 September 12 रे Zoom app केबे ना 2012 रे आस्तिला September 12 रे तो September 2012 रे it is compatible का है तो compatible ना Windows, macOS, iOS, Android, Chrome OS. This platform is free for video conference. This platform is free for video conference up to 100 participants at once with a 40-minute time limit. This platform free video conferencing up to 100 participants once with 40 minutes time limits for longer conference with the more features. Paid subscription are available costing $15-20 per month. The highest plan support up to 1000 concurrent participants for meeting lasting 30 hours. 1000. Zoom security feature include password protect. एटा कौन ना password protect. तो password protect है meeting user authentication, waiting room, locked meeting, etc. Google Meet. It is a video communication service. Video communication service developed by Google in 2017. Developed by Google 2007 Google Meet 2017. It can run seamlessly on Android, iOS and web platform. It can have to 100 free participants for time. It can be up to 100 free participants for a time limit for 60 minutes. It can be have 16 people. It can have 16 people
At particular time, it can cost between $6 $12 per month paid promotion $6 ରୁ $12 ସେଟା କେତେ 15 ରୁ $20 ଏଟା 6 ରୁ 12 ସେଟା ହଉଛି 15 ରୁ 20 ଏଟା 6 ରୁ 12 per month. Microsoft Teams. It is a property business communication platform. यह हूँ property business communication platform developed by Microsoft in 2017. It can schedule business communication platform. It can be unlimited number of meeting for limited time, i.e. up to 24 hours. It is compatible with the Windows, MSC, iOS, Android. MSC, iOS, Android. MSC, iOS, and Android. Microsoft Team requires a monthly subscription payment. Skippy. The Skype. It is a property telecommunication application developed by Skype Technologies Microsoft in. It is a property telecommunication application developed by Skype Technology. Skype Microsoft. August 2003. This app compatible with Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, etc. Skype compatible MacOS, Linux, Android. Skype can support up to 50 participants on single video conference, which free. If you want to invite more than 50 people for meeting, then you need to buy a paid subscription. The some number of participants the part of the meeting 250. तो क्लास टी सरीला तो आर क्वेश्चन आंसर करवा इंटरनेट एंड सर्विस रो ओके गुड बाय Thank you. Love you all. See you tomorrow.